then after that I'm just going to apply my inside primer. Then after that I'm just going to conceal my eyelid area with the help of my LA Pro concealer. And then after that I'm just going to set my eyelid area with the help of my Maybelline Compact. Okay, so first I'm just going to pick this lightest brown shade. मैं इस शेड को पिक करूँगी एंड अपनी आईज की आउटर व्यू पे अप्लाई करूँगी. Going to pick this nude brown shade and इसको अपने आईज की सेंटर पे अप्लाई करूँगी. I'm just going to pick this champagne shade and going to apply on my eyelid area. I'm just going to blend it well. And then after that I'm just going to apply kajal. अप्लाई माई मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. मैंने बस इतनी सी क्वांटिटी इसकी ली है एंड सबसे पहले मैं इसको अपनी फिंगर्स की मदद से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक. And then I'm just going to blend it. And I'm just going to set my face with the help of my Maybelline Compact. After that I'm just going to bronze up my face with the help of my this brush. ओके, सो मैं अपनी नोज को शेप देने के लिए इस पे भी हल्का हल्का ब्रॉन्जर अप्लाई करूंगी. Going to apply a little bit blusher. And at last I'm just going to highlight my face with the help of my Swiss Beauty highlighter. Last I'm just going to apply this red lipstick. इसको मैं अपनी लिप्स के सेंटर पे अप्लाई करूँगी बहुत हल्का हल्का. And on top of that I'm just going to apply my In Color Matte Me lipstick.